Hello students, we are going to start the next topic, composite function. In previous videos we discussed about functions, type of functions, relations and types of relation. Now in this part we will discuss about composite function. So you are familiar with the function. What is function? A relation f from a set A to a set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B. Then function, here example shown here, this is a function, each element of set A related with each element of set B, and not each, the elements of set A has unique image. The second one, you see, two elements of set A has the single image, so that is not a function. So what is function, what is not a function, you are familiar with this. Now the question is, what is composite function? So for composite function, that means combination of two functions, more than two functions. So how we will define, let f such that from set A to B and G from set B to C be two functions. There are two functions, one function is f and another is function g. Then the composition of f and g means two functions ka composition is denoted by g of f, that is denoted by g of, and is defined gof function, that is also read as gof, g circle f, gof from A to C, from A to C means you see here in the picture, a function f is from set A to set B. So if x is an element of set A, then its image is fx as shown in this here in set B. Now another function g is from set B to set C, g function from set B to set C. So image of this element means set B is working as a domain for this function and this is codomain for this g function. This B is working as a codomain for this function A. So the image of element of this B is g of under g, that is g of fx. So if we are combined this function from A to G, so that is denoted by G of f, that is your composite function from A to C. That is also shown here, composition of function, let f from A to B and g from B to C be two functions, then composition of f and g denoted by gof, that is read as f followed by g or g circle f or g naught f, is defined as the function gof from A to C, and it is given by g of fx. G of fx is equal to g of fx in bracket for every x belongs to A, means where x is element of set A. It is also represented in the symbolic form, f is a function and that is from set A, f is a function from set A to set B. So image of this domain element is fx, and now the another function from B to C, that is g. So under g the image of fx is gfx. So the function from A to C that is defined, that is gof function, g of function f. And in this case what will happen here, the domain of this set B for g function is equal to the codomain of this function f, means कोडोमेन ऑफ फंक्शन एफ, जो फर्स्ट फंक्शन आपने अप्लाई किया था ए से बी पे, उसका जो कोडोमेन होगा वो दूसरे फंक्शन के डोमेन के इक्वल होगा. ये फंक्शन जो आपका सेट बी है, ये दूसरे फंक्शन के लिए डोमेन की तरह वर्क कर रहा है.
तो कोडोमेन ऑफ फंक्शन f is equal to domain of G. This is your composite function. Now we are going to see here how we composite two functions. Let here you see example. The function fx is given as 3x plus 2 and function gx is given as x plus 5. These are the two functions. So f of gx means that is what? F of gx, that means that is fog from g followed by f. पहले g फंक्शन अप्लाई करना है, then we apply function f. So what will happen here? In this case you see f of g means firstly f of g, that means firstly you apply the function. In this case f of gx means function that is gx. When you apply gx, so f फंक्शन gx की वैल्यू आपकी क्या है उसको पुट कर दीजिए, दैट इज x प्लस 5. नाउ योर फंक्शन इज f ऑफ दिस इनपुट, ये आपका इनपुट की तरह काम करेगा. अब आप fx में जहाँ पे x है वहाँ की प्लेस पे क्या रखेंगे, x प्लस 5. व्हेन यू अप्लाई x प्लस 5 यू गेट f ऑफ x प्लस 5, दैट्स योर फंक्शन, एंड यू अप्लाई दिस, सो यू विल गेट f ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे चेक करिए, 3x प्लस 5 है. 3 टाइम्स इनपुट, ये जो x है वो इनपुट है, 3 टाइम्स ऑफ इनपुट प्लस 2. तो हम भी क्या करेंगे, दैट इज 3 टाइम्स इनटू x प्लस 5 एंड प्लस 2 आपका आ जाएगा. फर्दर यू सिंप्लीफाई, यू गेट 3x प्लस 15 प्लस 2, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका 3x प्लस 17 आपका आ जाएगा. दैट्स योर दिस पार्ट मीन्स व्हेन यू अप्लाई फॉग f ऑफ g मीन्स पहले g फंक्शन अप्लाई करना है फिर फॉलोड बाई फंक्शन f, दैट्स योर फॉग. नेक्स्ट वन हियर शोन इन द हियर, दिस इज व्हाट, दैट इज गॉफ फंक्शन g ऑफ f मीन्स पहले हमें फंक्शन f को अप्लाई करना है, देन फॉलोड बाई दिस apply the function g. So gof of x means g of fx. So when we apply fx is what, 3x plus 2, so 3x plus 2. Now we are going to find g of 3x plus 2 means इस केस में इनपुट आपका 3x plus 2 हो गया. तो सेकेंड फंक्शन में जहाँ भी x है वहाँ पे मैं 3x plus 2 रखूँगा. सो g ऑफ 3x प्लस 2 फाइंड आउट करने जाएंगे, दैट इज इक्वल टू x मीन्स जब इनपुट x होता था तो यहाँ भी इनपुट x ही आता था, तो दैट इज एज इज इट 3x प्लस 2 एंड प्लस 5 एज इट इज. सो दैट इज इनपुट प्लस 5, दैट्स योर इक्वल टू 3x प्लस 7. सो दैट इज योर composition of function. Composition of function is followed function is applied then followed by another function, and this is represented by gof or fog. Here you see in the picture, this is gof, that is gof of fx means if from a to c, so that is g, and that is f, so f followed by g. पहले हमें एफ एक्स अप्लाई करना है, मीन्स एफ फंक्शन का प्रॉपर्टी अप्लाई करनी, देन फंक्शन जी है. इफ फॉग इज रिटन दैट मीन्स फर्स्टली यू अप्लाई जी फंक्शन, देन यू फॉलोड दिस बाय एफ फंक्शन. सो दैट्स योर कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस. हियर सम एग्जांपल्स आर टेकन हियर. कंसीडर एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर. फाइंड गॉफ एंड फॉग, दोनों वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, फॉग एंड गॉफ. एफ एक्स की वैल्यू 8x है एंड जी एक्स की वैल्यू आपकी x प्लस 2 है. सो व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड गॉफ मीन्स g ऑफ एफ एक्स. सो सबसे पहले हम एफ एक्स अप्लाई करेंगे, सो एफ एक्स इज इक्वल टू 8x, सो g ऑफ 8x हो जाएगा. नाउ इनपुट इज 8x, सो इस सेकेंड फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 8x अप्लाई कर देंगे, तो g ऑफ 8x मीन्स 8x प्लस 2, जो भी फंक्शन होता है उसमें प्लस 2 ऐड हो जा रहा है. सो दैट्स योर फर्दर व्हेन यू सिंप्लीफाई यू गेट x प्लस 8x प्लस 2. So that's your gof. Now you find the fog. Similarly, f of gx
f of gx, put the value of gx, function gx is x plus 2. Now f of x plus 2 means f and input is x plus 2. So when fx, then 8 times of input, so when x plus 2, then that is equal to 8 time of input means x plus 2. When you further solve this, you get 8x 8x plus 16. Here you see the GOF is not equal to fog. In most of cases, GOF is not equal to fog, and that's your result. One more question, you try to find the composition of function here, GOF. The example number 15 you see here, that's example 15. The function f from 2, 3, 4, 5 to this function means the image of 2 is 3, the image of 3 is 4, the image of 4 is 5, the image of 5 is 9. So that is function defined from one set to another set. Similarly, function g is defined from one set to another set. Are the two functions. The function f2 means image of 2 is given 3, image of 3 is 4, image of 4 is 5, and so on. All the information is given here. Similarly, g3 is equal to g4 is equal to g7 and g5 is equal to g9 is equal to 11. मीन्स हमें इनपुट अप्लाई करने पे क्या आउटपुट मिलेगा वो हमें गिवन है. अब हमसे पूछ रहा है कि गॉफ फाइंड आउट करिए, तो हम गॉफ जब फाइंड आउट करने जाएंगे, दैट इज गॉफ दिस गॉफ. अब किसके लिए हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं? एफ ऑफ 2 के लिए सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं. तो गॉफ 2 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो क्या आएगा? जी ऑफ एफ एक्स. सो एफ that is f2. So what is the value of f2? f2 is equal to 3. So g of that is 3. Now check the value of g3. g3 is here and g3 is 7. So g3 is equal to 7. It means what? It means the GOF g of f2 is equal to 7. So that is composition of two function. Similarly, you find out GOF of 3, GOF of 3, GOF of 4, GOF of 5 and so on. You get the different values of composite function, two composite functions. So you try to solve the questions which are related with composite function and try and get their answers. Thank you.